Welcome everyone. Today we will analyze the total ion chromatogram, which is a critical data rich tool that summarizes the entire MS scan to allow for the identification and quantification of the compound. So we will learn how to analyze the TIC or the total ion chromatogram using GCMS. We will begin with what a total ion chromatogram represents or what is a total ion chromatogram. So a total ion chromatogram or TIC is a plot of retention time on the x-axis versus total ion intensity on the y-axis. So you can see here this is the retention time which is on the x-axis, and this is the total ion intensity or the relative abundance on the y-axis. Now, at each retention time or point, these are the retention times or the point like 5, 10, 15, 20. These are representing all the ions detected in the range 50 to 550 which are present at this particular time. Right? Got it? What I am saying is that at each retention time, the sum of all the ions which fall in the range 50 to 550 mass by charge ratio are detected. So TIC is very complex. Why? Because it does not represent a single ion or a compound. It represents overall all the ions or the compounds. So it becomes complex because it is not representing a single ion. So here you can see this is the list of information that we get with TIC. That is GCMS, TSQ series, sample type, unknown, sample name. All this information comes along with the TIC. So many times we are not able to understand what it actually means and what is the importance of these. So let us discuss each one of these and understand why and how are they important. So GCMS, gas chromatography, mass spectrometry. It is an analytical tool which combines gas chromatographic separation, that is the compounds in the volatile or semi-volatile forms are separated and then detected on the basis of the mass and identified and quantified, right? So they will be separated, gas chromatographic separation and mass spectrometric detection for identifying and quantification. It not only identifies but it can also quantify the volatile and the semi-volatile compounds. Now here it is mentioned sample type unknown. This indicates that the chemical composition of the sample was not predefined in the software. That is, all the instrument, they analyze the sample and the samples in two forms, that is targeted and non-targeted. So this was untargeted, that is the software was not aware about the sample type, and it is often used during screening, profiling or method development. Now next you can see it is GCMS's TSQ series. This is actually the model of the mass spectrometer. But what do we actually mean by TSQ series? So actually, or how are TSQ series different? So TSQ instruments are triple quadrupole mass spectrometers, and they are used for targeted analysis, high sensitivity and quantitative work. Now let us understand what does triple quadrupole mass spectrometer means. Let us first understand what is a quadrupole. So actually it is a device made of 4 parallel metal rods that use oscillating electric fields. Oscillating electric field means whose magnitude or direction varies with time. And
So these parallel metal rods, 4 metal rods, use this oscillating electric fields to separate ions based on their mass to charge ratio. ये आयंस को किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं? उसके मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, और इसलिए ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? एक फिल्टर की तरह, जिससे ये अलाउ करते हैं आयंस ऑफ ओनली सेलेक्टेड मास टू चार्ज रेशियो टू रीच द डिटेक्टर एट अ गिवन मोमेंट। कि मतलब एक गिवन मोमेंट या एक गिवन टाइम पे स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशियो के आयंस ही डिटेक्टर तक पहुंचेंगे। ठीक है। अब जो डिफरेंट मास टू चार्ज वैल्यूज होंगी, जिन आयंस की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, वो अलग अलग टाइम पे जाएंगे। तो अगर सेम वैल्यूज हैं तो वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे डिटेक्टर पे, लेकिन अगर उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, कौन सी वैल्यूज? मास टू चार्ज रेशियो, तो क्या होगा? वो या तो पहले पहुंचेंगे या बाद में पहुंचेंगे, बट दे विल नॉट रीच एट द सेम टाइम। नाउ a triple quadrupole mass spectrometer uses two mass filters separated by a collision cell to isolate a molecule. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ट्रिपल क्वाड्रुपोल होता है उसमें क्या होता है कि जो दो मास फिल्टर्स होते हैं, ये पहला मास फिल्टर हो गया और ये दूसरा मास फिल्टर हो गया, ये सेपरेटेड होते हैं एक कोलिजन सेल से। दिस इज अ कोलिजन सेल। और ये क्या करता है? कोलिजन सेल ये फ्रैगमेंट करता है, ये उसको तोड़ता है मॉलिक्यूल को, और उसके फ्रैगमेंट्स को डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये एक हाईली सेंसिटिव और एक्यूरेट क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। राइट। अब इसमें 3 क्वाड्रुपोल एलिमेंट्स होते हैं जो एक सीरीज में अरेंज्ड होते हैं। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3, और हर एक एलिमेंट का अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रुपोल और Q1 जो है विच इज अ मास फिल्टर, कौन सा है? ये वाला है। अब इसमें क्या होता है कि जो आयंस एंटर होते हैं फ्रॉम द आयन सोर्स, दिस इज द सोर्स, आयन सोर्स से जब आयंस इस यहाँ पे एंटर हुए, दैट इज Q1 में, तो जो आयंस स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशियो के हैं उन्हीं को अलाउ किया जाता है इसमें से पास होने के लिए। और ये जो सेलेक्टेड आयंस होते हैं इनको कहा जाता है प्रिकर्सर पेरेंट आयंस। दैट इज द आयंस when the ions come from ion source, they are filtered, and ions with a specific mass to charge ratio are only allowed to pass. और ये जो सेलेक्टेड आयंस होते हैं इनको कहा जाता है प्रिकर्सर और द पेरेंट आयंस। राइट। So in practical term, Q1 isolates the compound of interest from all other ions. ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि आयन सोर्स से जब आयंस एंटर हुए किसमें? Q1 में, विच इज अ मास सेलेक्टर, तो क्या हुआ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आयंस जिनका मास टू चार्ज रेशियो स्पेसिफिक था उन्हीं को अलाउ किया गया पास होने के लिए, और इन आयंस को कहा गया प्रिकर्सर और पेरेंट आयंस। अब सेकेंड क्वाड्रुपोल Q2, ये सेकेंड वाला हो गया। अब ये क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है कोलिजन सेल। कोलिजन सेल, तो यहां पे होता क्या है? ये मास फिल्टर नहीं है, दिस इज नॉट अ मास फिल्टर। ये एक्चुअली क्या करता है? CID है सेल का, मतलब कोलिजन इंड्यूस्ड डिसोसिएशन। ये उनको कोलिजन करा के डिसोसिएट करता है, फ्रैगमेंट्स में तोड़ता है। तो जो प्रिकर्सर आयंस एंटर हुए वो क्या करेंगे? वो एक इनर्ट गैस है यहाँ पे, इट कैन बी आर्गन और नाइट्रोजन, उनसे क्या करेगी? कोलाइड करेगी। और जब कोलाइड करेगी, कोलाइड करने का मतलब क्या हुआ? टकराएगी। तो उससे टकराएगी तो क्या होगा? टूट जाएगी, टूटेगी। तो जो कोलिजन फ्रैगमेंट्स होंगे ऑफ द प्रिकर्सर आयंस वो किस में बदल जाएंगे? प्रोडक्ट और डॉटर आयंस में, वो टूट जाएंगे ना सारे।
टकरा टकरा के क्या होंगे, टूटेंगे। टूटेंगे तो जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट आयंस और द डॉटर आयंस। और ये जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है ये कैरेक्टर होता है मॉलिक्यूल का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूल। तो दिस स्टेप प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन एंड इंप्रूव्स सेलेक्टिविटी। इससे क्या पता चलता है, उसके स्ट्रक्चर का पता चलता है। थर्ड क्वाड्रुपोल Q3. Now you see this is the third quadrupole Q3 mass filter, and what it does, it filters and detects specific product ions. Only fragments with selected MYZ values reach the detector. Now, why triple quadrupole instruments are important or preferred? Because of their exceptional sensitivity, high selectivity, robust quantification, and targeted analysis. Now, let us understand each one of these. Exceptional sensitivity. Now the detector is looking for a single known transition. क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि जो पहला Q1 था वहां पे सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ मास, फिर उसका क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ। तो इसलिए जो डिटेक्टर है अब उसे पता है कि उसे इट नोज व्हाट ट्रांजिशन इट इज लुकिंग फॉर। अब बैकग्राउंड नॉइज क्या होती है, बैकग्राउंड नॉइज होती है जो, और जो यहाँ पे केमिकल बैकग्राउंड मींस जो कॉलम है जिससे बना हुआ है दैट इज सिलोक्सेन्स, या फिर जो मैट्रिक्स में कुछ कंपोनेंट्स हैं, या फिर सॉल्वेंट के क्लस्टर्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, नॉइज क्रिएट करते हैं। नॉइज मींस दैट इज दे विल इंटरफियर। तो बैकग्राउंड नॉइज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये कैसे रिड्यूस होती है, बट एज इफ नाउ बैकग्राउंड नॉइज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस। तो अब ये जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम था, फिर जो आपके सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट क्लस्टर्स हैं, वो सब भी तो इंटरफियर करेंगे ना इसमें। तो अब क्या होगा, और जो एनालाइट्स हैं वो लो हैं एज कंपेयर टू दीज नॉइज। सो इन इन ओवरवेलमिंग या हाई मैट्रिक्स आयंस या नॉइज के प्रेजेंस में भी जो लो अबंडेंस एनालाइट्स हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या है, ये एक्सेप्शनली सेंसिटिव है। अब नॉइज हाई क्यों होती है एक फुल स्कैन या अनटारगेटेड एमएस में, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसमिट करता है और डिटेक्ट करता है बहुत सारे आयंस को साइमल्टेनियसली एक साथ। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो मैट्रिक्स आयंस होते हैं वो एनालाइट आयन से ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाएंगे नंबर में, और ये कंट्रीब्यूट करेंगे टू बैकग्राउंड काउंट्स। और बैकग्राउंड काउंट मींस ये भी तो इंटरफेयर करेंगे और यही नॉइज क्रिएट करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो वीक एनालाइट सिग्नल्स होते हैं उनको उनके एनालिसिस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इवन इफ द एनालाइट इज प्रेजेंट, वो क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा बैकग्राउंड में। किसके बैकग्राउंड में, नॉइज के बैकग्राउंड में, क्योंकि उनका नंबर क्या है, ज्यादा है। अब देखिए ये जो ट्रिपल क्वाड्रुपोल रिजेक्ट करता है नॉइज को, हाउ डज इट डू दिस। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट मास फिल्टर Q1। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि Q1 जो है वो केवल जो प्रिकर्सर आयंस होते हैं उनके जो पर्टिकुलर मास बाय चार्ज रेशियो होता है उसी को मूव करने देता है। तो जो मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स आयंस जो है वो रिमूव हो जाएंगे इस स्टेज पे। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एक तरीके से मास बाय चार्ज के रेशियो, मास बाय चार्ज रेशियो के बेसिस पे ये फिल्टर आउट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया तरीका जिससे कि नॉइज रिजेक्ट हो रही है। दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। अब जो ट्रांसमिटेड आयंस हैं वो क्या होंगे, फ्रेगमेंटेशन होगा उनका, किसमें, Q2 में, जिसे कहा गया था कोलिजन इंड्यूस्ड डिसोसिएशन। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो एंटर करेंगे वो क्या होंगे, वो कोलाइड करेंगे वहां पे जो इनर्ट गैस है, आर्गन या नाइट्रोजन उनके साथ, और फिर दे विल अंडरगो कोलिजन इंड्यूस्ड डिसोसिएशन। सो अब ये केमिकली स्पेसिफिक वे में होगा,
अब ये केमिकली स्पेसिफिक वे का क्या मतलब हुआ कि ये रैंडमली नहीं होता है कि कुछ भी फ्रैगमेंट हो गया, कैसा भी फ्रैगमेंट बन गया। ये जो फ्रैगमेंटेशन होता है ये डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, उसकी चार्ज लोकेशन पे और उसके फंक्शनल ग्रुप्स पे। ये क्राइटेरिया डिटरमाइन करते हैं कि उसका डिसोसिएशन कैसे होगा। तो अब हर एक कंपाउंड क्या करेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रैगमेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा, कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ फ्रैगमेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा अंडर द गिवन कंडीशंस। मींस जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कनेक्टिविटी होती है एटम की वो डिफाइन करती है कि उसका फ्रैगमेंटेशन पाथवे क्या होगा। अब जब बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो ब्रेक करेगा। तो अब जैसे देख लीजिए रिंग सिस्टम होता है या ब्रांचिंग होती है या कॉन्जुगेशन होता है, ये क्या करते हैं, या तो क्लीवेज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या तो फेवर करेंगे। अब जैसे लीनियर मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट्स हैं, तो इनका जो डिसोसिएशन होगा या फ्रैगमेंटेशन होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम साइक्लिक और हाईली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड क्लीवेजेस हैं वो डिफरेंट तरीके से होंगे। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात आती है तो फ्रैगमेंटेशन विल ऑलवेज फेवर वीकर बॉन्ड्स। जो वीक बॉन्ड होंगे वही तो आसानी से टूटेंगे। तो जो सिंगल बॉन्ड्स हैं ब्रेक मोर इजिली देन डबल बॉन्ड्स। या फिर बॉन्ड्स एडजेसेंट टू हेटेरो एटम्स वो आर वीकर एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, दे विल ब्रेक इजिली। या फिर बॉन्ड्स वीकेंड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, आयंस स्प्रेड, इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड कर जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं एंड द फ्रैगमेंटेशन इज प्रिफर्ड। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन पे डिपेंड करता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन विल स्ट्रांगली डिपेंड ऑन कि आयन में चार्ज कहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि जो bonds which are near the charge they break preferentially. Why? Because they experience the greatest electronic disturbance and therefore require very less energy to break. Hence, the bonds closest to the charge are easy to break. Now, charge retention. The fragment that can stabilize charge is favored. तो जब fragmentation होता है तो bond will break और चार्ज जो है दोनों में से किसी एक फ्रैगमेंट के पास जाएगा। तो उस फ्रैगमेंट को प्रेफर किया जाता है जो उस चार्ज को स्टेबलाइज करे इफेक्टिवली। तो वो फ्रैगमेंट फेवर किया जाएगा या प्रेफर किया जाएगा। अब स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो दैट इज लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द चार्ज स्पीशीज बाय डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि वो लेस रिएक्टिव हो जाए और लेस प्रोन हो जाए फर्दर फ्रैगमेंटेशन के लिए। तो जैसे कि अगर प्रोटोनेटेड अमीन्स के बारे में देखें तो वो उनका फ्रैगमेंटेशन होता है नियर द नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स डिक्टेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फ्रैगमेंटेशन पैटर्न। कैरेक्टरिस्टिक फ्रैगमेंटेशन पैटर्न कि इनका एक पैटर्न होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि भाई जैसे अल्कोहल्स हैं वाटर लॉस शो करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा, अमीन्स न्यूट्रल लॉसेस विद अमोनिया। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि भाई अगर वाटर लॉस है तो इट मींस इट इज अल्कोहल, इफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इज देयर it means it is a carboxylic acids. So these group specific losses are widely used for compound identification. Second mass filter Q3. Q3 transmits only selected fragment ions and any remaining unrelated ions are rejected. So you can very well understand that if it is transmitting only the selected fragment ions, the noise which is an unrelated ion will be rejected. So this will also reduce noise. Now sensitivity. Now detector is looking for
single known transition, and it will transmit only these single known transitions. So noise will be drastically reduced. And this is the reason. Which reason? Looking for a single known transition, that although signal to noise ratio is very high and the analytes are very low in abundance, but even then they are detected. And they are detected, so we can say that sensitivity comes from noise rejection. Now, high selectivity in complex matrices. This is a dual mass selection combined with characteristic fragmentation patterns. आपको पता है Q1, Q2, they are responsible for mass selection, and Q3 for fragmentations. So this makes false positives extremely unlikely. So matrix ions that share similar mass to charge ratio with a precursor will uh, never produce the same fragment ions at the same collision energy. Now, robust quantification, because each analyte is measured via a specific transition, quantification is precise, accurate, and resistant to matrix effects. Targeted analysis. In mass spectrometry means the instrument is configured to detect and quantify known analytes, set of known analytes, rather than scanning broadly for everything present in the sample. So the instrument monitors only these specific precursor product ion transitions, typically using multiple reaction monitoring. Now the detector records a signal only if the correct precursor and correct fragment are both present. Sample ID. Now sample ID is just a unique identifier which is assigned to the sample so that it can be traced in reports or publications or experiments. Then operator, a unique number is given so that the user account or the instrument operator can be identified. This is just for laboratory documentation. And then comes acquisition date, exact date and time, which will help to explain or compare the inter-run variability, that is the changes that take place between two runs in different times, which may be because it gets affected due to column aging or the source contamination. Then runtime, which is showing here as 53.11. It is the total duration of the GCMS in minutes, run in minutes. And this includes column elution time and any programmed temperature ramps. Ramps, that is changes in the temperature as per the program. While one, this is the position containing the injected sample. Then scan 15838 means the number of mass spectral scans collected during the runtime. During the runtime, that is the minutes, runtime in minutes. That is in 53.11. The number of mass spectral scans collected were 15,838. And it gives two information, either the runtime or the speed of the scan. And this high mass m by z 550 and low mass m by z 50. It means that the mass to charge ratio existing between the lower limit 50 and higher limit 550 have been scanned, and any value higher than 550 or lower than 50 have not been scanned. So what is the advantage of not going below 50? That is, it will exclude or reduce noise. Then ISTD amount, that is internal standard amount. So it was 0, that is no internal standard was used. And then sample weight 0, that is, this means that mass of the sample introduced or prepared for analysis was not entered into the method. Then dilution factor 1, it means that
dilution was not applied to the sample prior to injection, and values greater than 1 would reflect diluted samples. Then calibration level, not specified here, normally indicates the calibration point used for quantification in a validated method. कि अगर हमें quantification करना है तो calibration point mention किए जाते हैं validated methods में. Instrument method, not specified. This just shows the conditions of the GC, such as what is the column type, what is the oven temperature, which is the carrier gas flow, and MS parameters. Original processing method, initial data processing protocol applied after acquisition. And then current processing method, that has also not been specified. This indicates the method which is being currently applied and which may differ if the data were reprocessed. Stepwise analysis of a TIC. The very first step is to identify distinct chromatographic peaks. Now each peak corresponds to one or more compounds. एक या एक से अधिक compounds eluting at the same time, that is moving out of the column at the same time, might be indicated by the peak. Now the peaks are of generally two types, sharp symmetrical peaks and broad or asymmetrical peaks. तो ये जो शार्प और सिमेट्रिकल पीक्स होते हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं एफिशिएंट सेपरेशन. व्हाट डू दे इंडिकेट? एफिशिएंट सेपरेशन को इंडिकेट करते हैं और ये भी बताते हैं कि जो एनालाइट था, स्टेशनरी फेज था और मोबाइल फेज था, उनके बीच में जो interaction था, that was very good. They interacted properly. And जो पैरामीटर्स लिए गए थे जैसे कि कॉलम टाइप या फिर फ्लो रेट या टेम्परेचर और सॉल्वेंट ग्रेडियंट, that was well optimized. अब हम आते हैं ब्रॉड या एसिमेट्रिक पीक्स. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जनरली जो है एक पीक एक कंपाउंड के लिए करस्पॉन्डिंग होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इट करस्पॉन्ड्स टू मोर देन वन और टू और मोर कंपाउंड्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक सेम टाइम पे मोर देन टू कंपाउंड्स एग्जिट करते हैं कॉलम को, तो दे सेंड सिग्नल्स, एंड सिंस दे आर सेंडिंग सिग्नल्स एट द सेम टाइम, सिग्नल्स ओवरलैप कर जाते हैं और दे स्टार्ट अपीयरिंग एज अ सिंगल पीक, and this is called as co-elution. तो co-elution एक प्रॉब्लम तो ये शो करता है कि more than one compounds are eluting at the same time, and it also points out some specific problems. Now step 2, classify peaks by retention time regions. The chromatogram is interpreted in retention time zones, नॉट पीक बाई पीक रैंडमली. मतलब इनका यह है कि हम टाइम जोन्स के हिसाब से क्रोमैटोग्राम को इंटरप्रेट करते हैं, ना कि हम इंडिविजुअली एक एक पीक को लेके रैंडमली पीक्स को लेके करेंगे. तो अगर हम रिटेंशन टाइम जोन्स को लेके करते हैं तो हम क्या करेंगे? एक हो जाएगा हमारा अर्ली रिटेंशन टाइम रीजन, दूसरा हो जाएगा मिडिल रिटेंशन टाइम रीजन और तीसरा हो जाएगा लेट रिटेंशन टाइम रीजन. इन तीन रीजन्स में डिवाइड किया जाता है. अब अर्ली रिटेंशन टाइम रीजन जो होगा वहां पे स्मॉल वोलेटाइल कंपाउंड्स होंगे जो जनरली सॉल्वेंट्स और लो मॉलिक्यूलर वेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, और मिड आरटी रीजन में मॉडरेटली वोलेटाइल फाइटोकेमिकल्स होंगे. टिपिकली इसमें फैटी एसिड्स आते हैं, फिनोलिक्स एंड टर्पेनॉइड्स, एंड दिस रीजन इज मोस्ट रेलिवेंट बायोलॉजिकली. तो मिड आरटी रीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट होता है. और लेट आरटी रीजन जो होता है that is the high boiling lipophilic compounds, often long chain hydrocarbons, sterols, waxes, and high abundance but limited drug relevance. तो जो लेट आरटी रीजन में कंपाउंड्स होते हैं वो ड्रग रेलिवेंस उनकी कम होती है, although they are abundant. तो the most important region is the mid retention time region.
The total ion chromatogram is divided into three regions on the basis of retention time. Early retention time region, which is fast eluting peaks, 0 to 25% of the total runtime comes under this. So here in this TIC, 0 up to 18.5 comes under early retention time region. They are very weakly retained compounds and mostly solvents appear in this here. Then comes the middle retention time region or the moderate peaks. 25 to 75% of the total runtime, that is 18.5 to 37.5, will be included in middle retention time. Most analytes of interest are found in this region and best separation and resolution. Now, late retention time region, slow eluting peaks, 75 to 100%, 37 up to 56.1 for the given TIC. Strongly retained compounds, high boiling compounds are found in this region. Evaluate peak intensity and distribution. Peak intensity reflects relative abundance but not biological importance. This is a very important point, that the peak, which is relatively abundant, does not necessarily mean that it is biologically important. It cannot be biologically significant also. Dominant peak indicate major constituents, and minor peak, although they are minor peaks, but can represent potent bioactive compounds. So saying that largest peak is always the best compound is a wrong analysis, because largest peak cannot always be the best compounds. Step 4. Extract mass spectra from individual peaks. Mass spectra are extracted at the peak apex because there the signal is the maximum intensity. Fragmentation patterns can be compared with spectral libraries, and identification is considered tentative, especially in GCMS. Access, reproducibility, and peak resolution. Consistent retention times indicates analytical reliability. Well-resolved peaks are given priority over poorly separated ones, and possible co-elution is acknowledged wherever applicable. The total ion chromatogram is a composite signal representation of the sum of all detected ions at each retention time, providing an overview of the volatile chemical profile of the extract. So, total ion chromatogram and overview. If it is a MS spectrum, it will give identity. The peak area will give relative abundance, and retention time will be the supporting information. In our TIC, 40.87 minutes corresponds to the peak with the largest peak area. This is 40.87. This is in minutes, corresponds to the largest peak area. But it means that 40.87 minutes is the retention time of the most intense peak. That is intense peak. What do we mean by most intense peak? That is, it is having the highest total ion signals, and this is why it is having the largest peak area. So analytically, 40.87 retention time is equal to highest relative abundance among detected compounds. Means this peak, the ions in this peak are the highest relative abundance among the detected compounds. But what it does not mean? It does not mean, although it is the largest peak area,
it is having the largest peak area, it is having the highest total ion signals, it is a highest relative abundance among detected compounds. But this does not mean that it is the most important compound, or it is the most bioactive compound, or it is the best drug candidate. It definitely does not mean that it will fulfill these three requirements. So peak area just reflects how much of the compound reached the detector, not its pharmacological value. So now it should be clear that we can never say that the highest peak is the best compound. We can simply say that it is relatively abundant, but we are not sure about its pharmacological value. Now, we cannot determine the MYZ value from the TIC peak at 40.87 minutes alone. Why? Because this is the retention time, not mass by charge value. So the figure in a total ion chromatogram, a TIC, shows that when compounds elute, how intense the total ion signal is. It does not show the individual mass of the ion. So the question, mass by charge of the peak 40.87 is technically incomplete. So when the peak at RT 40.87 actually represents at 40.87 minutes, one compound or co-eluting compounds entered the MS. The MS detected many fragment ions simultaneously, and the TIC peak height is the sum of all those ions. And each of these ions has its own M by Z value. And mostly Z is equal to +1 electron ionization. How to obtain M by Z values for the 40.87 minute peak? We'll click on the apex of this peak and then extract the mass spectrum at that retention time. We'll see multiple peaks, M by Z peaks, example 43, 57, 71, 129, 256. And the highest intensity ion is called the base peak. So the highest of these, for example, if the peaks are 43, 57, so the highest will be the base peak. So the base peak will be 256. And the highest M by Z peak, if present, may correspond to the molecular ion. Only this spectrum tells you M by Z information. So the M by Z values come only from the extracted mass spectrum. Probability or similarity index. What it is? It is a measure of how closely the mass spectra of our peak matches the reference spectra in the library. Right? We always compare it with the reference spectra in the library. So we are comparing it with that. And probability shows that the mass spectra of my peak or your peak, how much it matches with the spectra in the library. So it has a range 0 to 100 or 0 to 99 depending on software. Higher number shows better match. So if it is greater than 800, very good match, likely correct compound. 600 to 800, moderate match, tentative identification. Less than 600, poor match, unlikely to be correct. Now, one thing is very important is probability is software based, not chemically validated. So high probability does not always guarantee correct identification, and library probability indicates the degree of spectral similarity to known reference compounds, but does not confirm the chemical identity. What is the meaning of area and area percentage? The peak area in the TIC represents total ion abundance of all the ions for that peak.
So area percentage is the relative proportion of this peak area compared to the sum of all the detected peaks. कि मतलब वो जो हमारा peak है उसकी उसका proportion कितना है as compared to all the peaks that have been detected. And it reflects relative quantity of the compound in the sample, not absolute concentration unless a calibration curve is used. तो ये हमें केवल रिलेटिव क्वांटिटी बताएगा कंपाउंड की कि दूसरे सैंपल के कंपैरिजन में ये कैसी है, लेकिन अगर हमें एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन जानना है तो हमें उसके लिए कैलिब्रेशन कर्व बनाना होगा. Important consideration: response depends on ionization efficiency, volatility, and fragmentation pattern, not just amount in the sample. The compound with a huge peak area may be abundant but biologically inactive, and a minor peak may be pharmacologically important. These are very important considerations. Now, peak area and area percentage indicate relative abundance in the sample but does not imply biological activity or absolute concentration. Very important point. The results of the column has certain limitations. So we are going to discuss that. So first of all, I'll tell you the meaning of caveat. The caveat of the GCMS analysis is the absence of an internal standard which limits the interpretation. So columns, for example, probability and similarity index, meaning match the quality with library spectrum. Now, what is the caveat or the limitation in the interpretation? The limitation is that a high similarity index does not guarantee correct identification. Structurally related compounds and isomers may also produce similar spectra. Therefore, SI values must be interpreted together with retention time and authentic standards. Now, area, that is the total ion signal of the peak. Peak area is influenced by ionization efficiency, fragmentation behavior, detector response, and without calibration using standards, peak area alone cannot be used for absolute quantification. Now, area percentage, percent of total TIC. So area percentage does not reflect concentration, especially when compounds have different ionization efficiencies or molecular weights. It should be reported as relative abundance, not composition or the weight percentage. So this is the image of a mass spectrum. In short, mass spectrum is a fingerprint of the molecule based on how it behaves as ions under electric or magnetic field. The x-axis represents mass to charge ratio. So this x-axis will represent m by z ratio. And the y-axis represents relative intensity of the detected ions. Now peak corresponds to ions with specific mz values. So each of these peaks are ions with specific mass to charge values and which can indicate the molecular fragments of the analyte. So the highest peak at m by z mass to charge ratio is 30. This is the highest. So this is the base peak. The highest will be the base peak, meaning it is the most abundant fragment. So base peak is what? The most abundant fragment. So in this chromatogram, 30 is the highest peak. So it is the most abundant fragment. Other significant peaks are 15, 46, 61, which likely correspond to characteristic fragment ions. And smaller peaks are 2, 13, 14, 16, 26, 29, 31, 44, 45, 48,
49, 48, 59, 60, 62. These are smaller peaks which indicate minor fragments. This pattern can be used to identify the molecular structure and confirm the molecular weight of the compound. Now peaks at m by z, mass to charge ratio 15 and 29. 15 and 29 often suggest that methyl and ethyl fragments. What do they suggest? Methyl and ethyl fragments. So this is methyl and this is ethyl. Peaks at mass to charge ratio 46 indicate formal or a CHO plus group or similar groups. The molecular ion peak, if present, is usually the highest m by z value. The molecular ion peak is usually the highest, and here which here seems to be 62. This is the highest mass to charge value, which is 62, and this is known as the molecular ion peak. Now, how is total ion chromatogram and mass spectrum different? Data type. Total ion chromatogram is time resolved, whereas mass spectrum is resolution on the basis of mass. X एक्सिस पे रिटेंशन टाइम होता है और यहाँ पे क्या होता है, मास टू चार्ज रेशियो होता है. Y एक्सिस पे टोटल आयन करंट होता है, यहाँ पे आयन की इंटेंसिटी होती है. पर्पस क्या है? टू डिटेक्ट एंड विजुअलाइज इल्यूशन, यहाँ पे आइडेंटिफाई कंपाउंड्स. केमिकल इंफॉर्मेशन, नो. Yes, we get chemical information used for peak detection and integration. Here, structural elucidation and library matching. So these are the difference between the total ion chromatogram you get and the mass spectra you get. What noise means in GCMS? Noise is any MS signal that does not originate from analytically meaningful ions of the target compounds. So it appears as random or systematically low intensity signals across the spectrum and chromatogram. So main sources of noise below mass to charge ratio 50 is that of the carrier gas or the background gases such as helium, nitrogen, oxygen, water vapor, carbon dioxide, which produce low mass ions. So for mass to charge ratio is 18 for water, 28 for nitrogen and CO plus, 32 for oxygen. So these signals are abundant and continuous, but analytically they are useless. What is column bleed? By column bleed we mean that in the stationary phase, GC in the stationary phase releases small siloxane fragments, and this is due to thermal degradations, and these fragments dominate the low mass to charge region and increases with temperature. So and what they do is they interfere with the real compound signals. Now what is solvent related ions? In the common GC solvents, fragment is strongly at low values, mass to charge values. Example, acetone 43, methanol 31. And these ions persist throughout the run and add non-specific signals. Electronic and detector noise. Random fluctuations in detector response produce small ion counts. This noise is most visible at low mass to charge ratio where ion abundance is already high. Why low mass noise is a problem? The low mass ions are non-specific and shared by many unrelated compounds, are produced by common functional groups and fragmentation pathways. So as a result, chemically unrelated compounds can generate the same ions, making these fragments non-diagnostic and unsuitable for confident
identification. These inflate total ion current. So the abundant non-specific ions contribute excessively to the total signal, and this artificially increases the TIC baseline and peak height even when the ions do not originate from the target compound. Reduce signal to noise ratio for diagnostically important ions. The non-specific ions dominate ion population, which increases background noise, and relative intensity of compound specific ion decreases. So as a result, diagnostically important ions appear weaker relative to the background, lowering the signal to noise ratio and making them harder to detect or quantify accurately. Complicate spectral matching with library databases. Library matching algorithms rely on relative ion intensities and fragmentation patterns. So excessive contribution from non-specific ions, as a result, including them reduces identification confidence rather than improving it. Why mass to charge ratio of 50 is a standard cutoff? Because 50 cutoff suppresses background and chemical noise. By restricting data processing to selected diagnostic ions, signals arising from column bleed, solvent background, and unrelated matrix components are excluded. It improves spectral clarity. When non-specific ions are removed, the remaining signal reflects ions that are directly associated with the compound of interest, and this results in a cleaner chromatographic peak and mass spectra in which diagnostically important fragments are more clearly resolved. Enhances library match quality. Library matching algorithm depending on accurate relative ion intensities. So suppression of non-specific and background ions preserves true ion ratios, leading to higher similarity index values and more reliable compound identification. Why? Because non-specific and background ions uh, have been suppressed. Now focuses acquisition on structurally informative fragment ions. Structurally informative ions arise from characteristic fragmentation pathways linked to specific functional groups or molecular frameworks. So focusing on these ions increases selectivity and ensures that the acquired data are directly relevant to structural elucidation. Why? Because the background and non-specific have been removed. So in this lecture, I explained you how to analyze the total ion chromatogram and the various terminology related to it. So I hope you liked the video. Please like and do subscribe. Stay tuned.